और के बच्चों की सफलता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अकुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है, लेकिन और ही बढ़ाया। कितने परसेंट में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है। ये खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी है। अगर सेवा करने वाली आत्मा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो करी, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है, और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वो भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि मैंने भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वो सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, भाव, भावना और स्वभाव, बोल। अगर ये 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं है, 2 है, एक
पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम्ही, रक्षक तुम्ही, दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति।
ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन। अव्यक्त इशारे। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथीपन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। मनन चिंतन करते रहो तो मौज में भी रहेंगे। ज्ञान के मनन चिंतन से ही प्राप्ति होती है। एक बार किसी ने दादी जानकी से पूछा, मनन करने कैसे मनन करूं? तो दादी ने कहा, देखो कोई मन में बात लग जाती है, चित्त पर लग जाती है तो भूलती नहीं है, वो बार बार संकल्प आता है। ऐसे ही जब ज्ञान सुनते हो तो दिल को कौन सी बात लगी, चित्त को कौन सी बात लगी, वो अपने आप मनन चलता रहेगा ना उसका। लौकिक रीति से कोई किसी को सिखाता तो नहीं है कि ये बात आप बार बार याद रखना। उसके दिल को लग जाती है, वो बार बार याद आती है। ऐसे ही ज्ञान में भी जो बात दिल को लग गई, जैसे हर शब्द सुनते हुए भी समझते हुए भी लगता है इसकी गहराई में जाना जरूरी है। जैसे आज अभी मुरली रिवीजन हुई, हम लोग जो मुरली संडे को चलती है वो अगले सैटरडे तक रोज थोड़ी रिवीजन होती है इससे पहले। तो उसमें बाबा ने कहा कि सेवा तो सभी करते हैं पर जमा का खाता सबका सेम नहीं है।
तो नेचुरली विचार चलता है कि किस प्रकार की सेवा, सेवा में कैसी वृत्ति, क्या लक्ष्य हो जो जमा खाता भी रहे। तो उस पर बाबा ने बताया किसी को खजाना मिलता है तो एक तरफ करके रख देते हैं ना कि मेरे पास इतना है, बहुत अच्छा है। और कोई जो होते हैं वो समझदार होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यूज़ भी करें, जमा भी करें। तो जमा होता है इन्वेस्ट करने से ना। जब काम में लगाते हैं कुछ भी, आपके पास धन है, आप बिज़नेस शुरू करो तो कमाई होगी ना। धन रखने से तो कभी जमा नहीं होता ना सिर्फ, क्योंकि जो धन है वो यूज़ तो करना ही पड़ता है ना। परंतु यूज़ करते हुए भी, तो जैसे बाबा ने बहुत थोड़ा-सा ही आज रिवाइज़ हुआ, पर मेरे मन में यही उस समय ही चलना शुरू हो जाता है। तो अब कोई मनन चिंतन, कोई मेहनत नहीं है, नेचुरल होना चाहिए। जैसे और बातों में, समाचार में, इधर की बात में कइयों के बहुत चलता है और हम तो सुनते हुए भी भूल जाते हैं कि इन बातों को क्यों मन में रखें ना। तो इसलिए बाबा, जब एक बार बाबा ने कहा या बात मन में होगी या बाप मन में होगा, तब से लेकर के अगर बाप को याद करना है तो बात को मन में नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से ज्ञान की कोई भी बात सुन लेते हैं, फिर उस पर मनन चलता है। तो आप लोग भी एक नेचर बनाओ मंथन करने की। तो क्या मंथन करना है? कई बातें हैं, परंतु मूल से क्या है कि सेवा करते हुए खाता जमा हो। बाबा ने कहा सब खजानों के मालिक हो, तो मालिक भी हैं, फिर खाता भी जमा कराना है। आजकल सबको ध्यान देना चाहिए कि बाबा तो है ही, मदद भी करेगा, पर बाबा ये भी देखता है कि ये बच्चा इतना ज्ञान सुना, कितना समझदार बना, कितनी शक्तियाँ जमा करके यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ़ आधारित तो नहीं रहेंगे ना, बाबा बाबा करें। जित हमें करना है, जहाँ हम नहीं कर पाते हैं, तो बाबा की मदद मिलती है। बाबा तो नहीं करेगा ना। एक बार बाबा ने कहा बाबा तो नहीं पुरुषार्थ करेगा ना, बाबा को तो प्रारब्ध नहीं चाहिए। तो इसलिए पुरुषार्थ भी हमें करना है और फिर जो उसकी प्राप्ति है वो भी आत्मा को ही मिलेगी। बाबा हमें सिखाने आए हैं, योग्य बनाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो हर एक को करना ही होगा। तो इसलिए कभी भी अपनी जीवन में, चाहे कोई भी किसी भी ड्यूटी पर है, लेकिन ज्ञान का मंथन, ज्ञान का फाउंडेशन, ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान की जो समझ है, उसके आधार पर फिर अपना संकल्प, अपनी वाणी, अपना कर्म उस समझ के आधार से और शक्तियों के आधार से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाबा कह रहे हैं सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन। तो इस पर क्या विचार चलेगा? बेहद की दो अर्थ होंगे ना, एक होंगे कि बहुत, अनंत, लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, और दूसरा होगा फॉरएवर। एक संगम युगी है जो जहाँ हम संस्कार बनाते हैं। तो जो संस्कार बनाते हैं, नहीं, कई बार बाबा कहता है बच्चे प्रारब्ध इतनी बनाओ जो अगले कल्प, मतलब संगम पर जब हम पहुंचे कलयुग के अंत में, तो भी हमारे पास खजाने हो, थोड़े तो बचे होंगे। चाहे पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, आनंद है। कई पूछ रहे थे एक दो दिन पहले कि क्या ये सब पहले से ही था? तो हम देखते हैं कि बहुत गुण पहले से ही होते हैं। जब हम ज्ञान में आए तो बाबा देखता था कि ये बच्चों का तो ये नियम है, ये वो पहले ही, ज्ञान से पहले भी नैतिकता, आध्यात्मिकता, जो इच्छा मन में ये होती थी ऐसी जीवन हो, तो वो सारा कल्प संस्कार अंत तक चलते हैं। तो संगम युग का महत्व है।
तो इसलिए जो बाबा कह रहे हैं ना कि सदा बेहद के प्राप्तियों में मगन। एक संगम युगी है जहाँ पर पुरुषार्थ और प्राप्तियां दोनों होती हैं। प्रारब्ध सतयुग में मिलेगी, पर प्राप्ति तो यहाँ है ना। तो प्राप्तियों में मगन रहते हैं या पुरुषार्थ में? जो प्राप्तियों में मगन होगा उसके संस्कार बनते जाएंगे। सिर्फ पुरुषार्थ में मगन होगा उस, देखो कई होते हैं ना जिनको हैबिट होती है, या सुस्त होते हैं या बहुत काम करते हैं। या तो नहीं, बाबा ने कल बोला कि आराम पसंद होते हैं, या फिर जब देखो तो काम ही करते रहते हैं। तो कैसे पुरुषार्थ और प्राप्ति जीवन में, तो उससे क्या है, जमा भी होगा ना। जो प्राप्ति हो रही है वो जमा होती जाएगी। तो सिर्फ पुरुषार्थ करते रहो, या सिर्फ सोचो कि मुझे प्राप्ति है, थोड़ी सी प्राप्ति हुई उसी में ही मगन हो गए, नहीं। तो बहुत गहरी बात है, और संगम के हर घड़ी का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये टाइम पूरा हो जाएगा। तो जो बाबा का साथ, रोज बाबा का ज्ञान, ब्राह्मण परिवार का संगठन, तो बाबा इसलिए कहते हैं सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। क्या है बाबा का पत्र? दादी हमको कहती थी मुरली हमारा न्यूज़पेपर भी है, और मुरली जो है वो प्रेम पत्र भी है। बाबा रोज बच्चों को प्रेम से सुनाते हैं। बाबा याद प्यार भी देते हैं, और साथी बनकर सदा साथ भी निभाते हैं। उठते हैं, माता पिता का प्यार से उठते हैं, फिर बाबा टीचर बन के पढ़ाते हैं, गुरु बन कर के दिन भर के लिए क्या डायरेक्शन है, श्रीमत है, वो भी सुनाते हैं। फिर दिन में जो भी संबंध चाहिए बाबा साथ निभाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा याद प्यार भी देते हैं, और साथी बनकर सदा साथ भी निभाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्यार में अपनी सब क्या करना है, कमजोरियों को कुर्बान कर दो। ये भी क्यों संस्कार रखूं, ऐसा भी स्वभाव में क्यों हो। कोई भी बात, अभी बाबा ने क्रोध पर बहुत कहा। क्रोध नहीं आता है तो आवेश होता है, आवेश नहीं होता है तो एक चुप भी कई बार गुस्सा होता है। तो इसलिए कई तरह के, तो वो कमजोरियां को कुर्बान करो, परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। नहीं कर सकते, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, ये सब हदें हैं। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो नहीं कर सके, पर ये अपने अंदर हम बना लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती। वो अपने लिए अच्छा नहीं है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने इतनी आयु थी, अंत घड़ी तक न केवल याद की अवस्था बनाए रखी, पर बाबा कर्म योगी भी रहे। बिल्कुल अंत में एक दिन पहले बाबा ने, रमेश भाई ने बाबा से कुछ काम दिया था, बाबा हाँ नहीं कहनी थी, तो बाबा ने सबको एक दिन पहले ये भी करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। तो बाबा कर्म योगी भी रहे, परंतु इतनी अच्छी अवस्था थी कि जाते समय बाबा ने एक बार भी ये नहीं कहा यज्ञ का ध्यान रखना। शिव बाबा का यज्ञ है, हाथ में हाथ दिया दादी प्रकाश मणि को,
और बाबा व्यक्त हो गए। तो हमारे सामने उदाहरण है ना, क्या करना है कि सब कुर्बानी कुर्बान कर दो और परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी आकर्षित तरफ न आकर्षित कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाएगी। बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाएगी। इस समय आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है रूहानियत की। मैं जिस दिन आई सवेरे अमृत वेले, समय का भी फर्क है तो हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो पहला संकल्प ही आया कि अपने व्यक्ति पर्सनालिटी में हर एक को रूहानियत लानी है। रूहानियत क्या होती है, मतलब इन बातों की गहराई में तो जाना होगा। तो इसलिए ये हमारा होमवर्क है, और होमवर्क जो स्टूडेंट करता है तो उसकी रिजल्ट तो अच्छी होती है। कई आते हैं स्कूल से आके अपना किताबों का बस्ता फेंक देते हैं, तो माँ बाप तो यही पूछते हैं, भाई होमवर्क किया, होमवर्क किया। तो बाबा भी देखते हैं कौन बच्चे ठीक से होमवर्क करते हैं, उसकी प्राप्ति तो होती है। ओम शांति। दादी जी की विशेषताएं तथा अनमोल शिक्षाएं सदा निमित्त भाव की स्मृति से बेगमपुर की बेफिक्र बादशाह दादी जी हमेशा कहती कि बाबा का मुझे पर्सनल वरदान है, जो कभी कोई बात का मुझे फिक्र या चिंता नहीं होती, कोई व्यर्थ चिंतन भी नहीं चलता। इसका कारण है हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला बैठा है, तेरी रचना है तो उसका फिक्र करो। जब कराने वाला वह है, जवाबदार वह है, हम निमित्त हैं, तो फिक्रात किसकी? कोई बात है, प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि चिंता चिता के समान है। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिविजन 1969 से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्त वाणी तारीख है 2 फरवरी 1976। भक्तों और पांडवों का पोता मेल। उनकी गतिविधि सेकंड तक पहुंची है। इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे हैं, तो उनका पोता मेल संपन्न तैयारियों का देखा। अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं, रिफाइन हैं, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। यह था यादों का समाचार। अभी अपना सुनने की इच्छा है। प्रेरणा लेने वाले तो तैयार हैं,
लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है। वैसे कहावत है, देने वाला दे, लेने वाला थक जाए। लेकिन इस बात में लेने वाले ना मिलने के कारण थक रहे हैं। लेने वाले लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन देने वाले स्वयं में ही अब तक लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का पोता मेल क्या हुआ है, वो जानते हो या सुनाए। ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी। विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजॉरिटी के पास इमर्ज है। लेकिन चलते चलते जैसे यादों की स्पीड क्वेश्चन मार्क्स के कारण तीव्र नहीं होती, ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। तो बीच में कोई न कोई रॉयल रूप की कामना शुभ कामना को मर्ज कर देती है। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। माना बहन के घर में किया। तो मैंने कहा अच्छा कीर्तनी के पास तो चलेंगे। अच्छा कितने बजे? तो कहा और अभी तो शाम का टाइम है और कल सुबह को 10 बजे सत्संग होता, आप 10 बजे आ। तो बाबा सुबह को 10 बजे सत्संग करता था, क्योंकि अभी अभी तो महिला माताओं का ही था। तो मर्द लोग तो सब दुकानों में जावे, तो माताएं 10 बजे से 11 फ्री होती है। तो उस टाइम में वो छोटा कमरा था, उसमें बाबा ने सत्संग शुरू किया। मैं समझती हूँ कमरा थोड़ा बड़ा था, जैसे कोई बड़ा कमरा हो, इधर इधर पलंग, बीच में गद्दी थी, बस वहां सत्संग होता था। जैसे गीता पाठशाला करते हैं ना, ये आदि शुरू स्थापना गीता पाठशाला के मुआफिक हुई है। उसी कमरे में बाबा का सत्संग। रात को आके बताए नहीं कि सखी ने कहा कि चलो सत्संग में, तो मैंने रात को आकर के, क्योंकि एक बात सुनाऊं, उस समय में हम लड़कियां होती थी ना, कि मम्मी पापा के छुट्टी के बगैर हम कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। आज लोग तो आप लोग कहाँ भी घूमने जाओ, नहीं मम्मी मैं यहाँ जाती हूँ, मम्मी कहेंगी जाओ तो जाएगी, कभी नहीं जाते थे। आज्ञा में रहते थे, बहुत मम्मी पापा के आज्ञा में रहते थे। कभी मम्मी पापा को सामने जवाब दियो, मस्ती करो, कभी नहीं। मुझे याद नहीं कभी ऐसा कारण बने कि कोई मम्मी पापा को कोई सामने में जवाब दे, नहीं, बिल्कुल जैसे वो कहे वैसे करना। तो आज्ञाकारी रहते थे। तो उस टाइम में भी इतने मैनर्स थे नहीं, कभी कोई ऐसे कहाँ जाना, कभी कोई लड़का, कोई संग, कोई ऐसा कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा का प्यार भी रहता था तो कंट्रोल भी रहता था। तो हम बच्चों में वो संस्कार ही नहीं होता था, कहाँ इधर उधर जाना आना, घूमना फिरना, कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हमने आके रात को बोला पापा को कि पापा ऐसे यहाँ कोई सत्संग ओम की धुनी पर होता है, वहाँ श्री कृष्ण का होता है। नहीं मैं बोलूं उनसे पहले, मैं पीछे बोलती हूँ। उनसे पहले रात के टाइम में जब पापा दफ्तर से आया तो कहा बेटी तुम्हें तो छुट्टी है स्कूल की, और यहाँ एक दादा है, दादा नाम सुना था, दादा कौन है वो मुझे नहीं, पर दादा नाम सुना था, और वो गीता पर सत्संग करता है
और माताएं जाती है और सुना है थोड़ा ओम की धुनी करते हैं। तुम बेटी फ्री बैठी हो, स्कूल तो तुम्हारा बंद है, क्यों नहीं जाती हो सत्संग करने? ये पहली बात मुझे पापा ही कहता। तो मैंने कहा वो दादा है कौन? तो फिर बताया कि वो दादा जो रामानंद सत्संग करता था, ये वो है, आप उसका तो सुन रखा था बाबा का नाम। मैंने कहा अच्छा। तो मैं आज गई थी लीला के पास, उसने भी मुझे कहा कि तुम चलो, वहाँ श्री कृष्ण का दीदार भी होता है। हाँ, उनकी धुनी होती है, मुझे पता है। तू जाओ बेटी, तू जा, तुम्हारा तो कृष्ण से प्यार है ना, तू जा। तो अब समझो वो मुझे सुबह को याद करके फिर भेज देता है कि तू जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स को तो जानते थे। तो फिर मैं अब यहाँ है कि मैं सुबह को और फ्रेंड के पास गई, मैं उनके साथ मिल करके मैं सत्संग आमने सामने ही था। तो जब मैं बाबा के पास पहुंची तो फिर क्या हुआ, अब बात सुनाती। तो जब मैं वहां सत्संग में पहुंची तो बाबा ओम की धुनी लगा रहा था, और वो ओम की धुनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमें नहीं आती, पर बहुत, उस टाइम में तो हम सब करते थे। बहुत अच्छी ओम की धुनी है। और बस मैं जैसे वहां गई और ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई, तो ना मैं भी ध्यान में चली गई। था दरस शिव नूर का भी स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी, रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, दादी सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। Om Shanti. In order to be an easy yogi, become experienced in God's love, remain constantly lost in unlimited attainments. The Father has so much love for you children that in order to give you a response every day, He writes such a long letter. He gives love and remembrance and becomes your companion and fulfills the responsibility of companionship. ये तो दादी अपनी कहानी सुना, ये नहीं अलग कर। For this love, surrender all your weaknesses to Him. Remain merged in God's love in such a way that no limited influence can attract you. Remain constantly lost in unlimited attainments through which the fragrance of spirituality spreads into the atmosphere. Om Shanti. Om
Shanti, welcome to Vikti Parivar. Today is day 5. In order to be an easy yogi, become experienced in God's love. Today's topic: remain constantly lost in unlimited attainments. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. Everyone, okay? Everyone merged in God's love, right? This is the month where Baba is talking about God's love. But then Baba wants us to remain merged in God's love, right? But today Baba is saying, remain merged in your unlimited attainments. I think, how do you feel listening to Dadi? Her story in her own words. Because when others share story, they might miss some of the facts. When you share your own story. But the song which is also played after is so beautiful. It says that our Dadi. Dadi used to live in Bombay and I was in Delhi. So I was more connected with Didi Mohini because she was in charge of Delhi. But then when Mama left body, then Baba told Didi to come and be in Yagya. It is only when Baba was becoming aware that Dadi Prakashwani came to Madhuban in January, just for a few days. And then she comes to Baba, Baba, I go tomorrow. No, stay. Then again she will go after a few days. Baba, do I go? No, stay. 1 month Dadi Prakashwani stayed. And then, of course, Baba knew, and after a month, when January 18th, Baba gave night class and then came in the room. And very, very beautifully, I always think of this is how I want to live body. Not in hospital, not with tubes on, but like our Baba. Incognito efforts which he must be making, that he was able to leave the body in such a way. And while leaving, he held Dadi Prakashmani's hand. And Dadi still feels that hand, and she used to tell us that then Baba gave drishti and Baba left. That means he gave hand over in a way the responsibility of Yagya to Dadi Prakashmani. So they beautifully, then both of them, Didi and Dadi, they both were in Yagya. And of course, gradually as the need grew, then Manohar Dadi from Karnal was invited to be in Gyan Sarovar. Then Chandramani Dadi from Punjab. Gradually they keep bringing Dadis here. We are trying here too, but everyone is so busy in their roles, right? I always ask Muni, what about all those seniors? And luckily, I think maybe it's our part that Sudesh Didi, means she also has whole Europe, England, but she was told to stay, and she said, okay. Dr. Nemla left whole Asia, Australia, and said, I will stay.
we are told to stay at least half of the year, and we both. So it's like, we say, but what about sisters here? And they have big zones. I said, they have zone, we have countries, right? Each one of us about 55 countries. So we still say, it's all right, it's Baba's Seva. It's not only Bharat, no? We have whole world together. So, but deeply within is Baba's Yagya, whatever we can do to sustain Baba's Yagya, and especially to keep it free from obstacles, right? More spirituality, more togetherness, and even the theme chosen for this year is unity and trust, right? I think these are very important qualities. So the homework which we are taking from this Avyakti signal is remain constantly lost in unlimited attainments. बेहद की प्राप्तियों में समाये रहो. It's very interesting, no? When I hear this, now I start, how it is, what is it? Let's try it today. To be clear about what it means to be merged in unlimited attainments, and then be in that stage, and experience what is really it is to be merged in God's unlimited, lost in unlimited attainments. Father has so much love for you, children. You are feeling that, right? Father has so much love for you, children, that in order to give you a response, so he has love, we have love. So the response he gives of love, every day he writes such a long letter. He gives love. That very few days, Baba was in Bombay in hospital. And in the morning he woke up, he said, oh, children must be waiting for the love letter. So he started dictating Murli, and one sister was writing, and it was immediately sent. And Baba said, no, children are waiting. So Baba never missed a single morning. Every morning, I remember that, especially sometimes we came when it was so cold in Mount Abu. And now we have heaters and everything. Every morning, Baba, just wearing a sleeveless sweater and a shawl wrapped around with Baba's slippers for just one strap. And later on we asked him, wear socks, it's too cold. But before, so he wore socks and he will go for Murli. It's cold, let me do Zoom maybe from my room, and I don't go. Sometimes we do, right? He said today it's too cold. But Baba never, he just went in time and spoke Murli to each one of us. And that's the response of our love. No? And I used to feel like when he will walk from his room to history hall, even it was short distance, but it was very, very cold. But Baba did respond to our love. And Baba said that he gives love and remembrances and becomes your companion. Becomes your companion and fulfill the responsibility of companionship. So again, many people come to me, and especially in foreign, oh, you have such a big responsibility. I said, what? Yes, I have now more responsibility of my own self because the expectations have grown, and so I have to look at myself. I have to make better efforts so that automatically, but it's not I'm responsible, no. Baba is responsible even for me.
So I can't be responsible for anyone. So this way we are able to play our part in a way which is to be double light, right? So how to follow Baba? Baba says that love and remembrances becomes your companion and fulfills the responsibility of companionship. For this love, surrender all your weaknesses to Him. Excuses, a lot of excuses. I couldn't do it, I can't do this, I can't. So Baba says, remain merged in God's love in such a way that no limited influence can, no limited influence can, or it will be end. Nothing can really influence, limited influence shouldn't be there. So reflect on this, either each word, each sentence, whole concept of unlimited attainments is only at confluence age. And I did mention in Hindi one that, why it is unlimited, because outside in the world, I don't know. You don't know much about it. But because I'm coming from the West and the threat is going on any day, nuclear war, which America is threatening Russia, and Russia is saying, okay, we are ready. So even it could be vocal, but you don't know, any day war can begin, world war can begin any day. So we have to see that very short time is left for confluence age. And because of that, we have to be prepared. So Baba says, yeah, I didn't. Influence can attract you. So remain constantly lost in an unlimited attainments through which the fragrance of spirituality. So what is spirituality? Lost in unlimited attainments through the fragrance of spirituality spreads into the atmosphere. So everyone at this time is supposed to be doing this, what Baba is saying. Otherwise we say we have love for Baba. It's only my Baba. We surrender our life to Baba. But limited attractions. We forget about unlimited attainments. So limited attractions means you are not lost. What do we need? Do we need anything? Actually, if you look at what you have, every day you will take out few things. I don't need this. I don't need this. That's what I do. Why we need this? We don't let somebody use it. So I am just telling the world news. Even today is the threat of nuclear war. And nuclear war is something which, and it's not, it can't happen because Baba also said what will happen. These days, the gifts they give to each other is warfare. Shopping they're doing is buying jets, buying this, buying that. It's like that reality which Baba says. And sometimes I emerge and imagine, I said, okay, if this happened this time, what will be my stage? What should be my stage? So confluence age where I create sanskars and they continue. So it's a big topic and we have limited time. We have a special guest today, Gopi Ben. And she must tell, she came in from where she flew. Just and arrived. she's ever ready sister. Om Shanti. Well, we follow in the footsteps of our seniors who are always ever ready. So Didi, first of all, lots of love and remembrances from the China family. She's coming from China family. And then via London you came? No, I came straight from China back to Delhi. China to Yeah.
then we'll go. When for did that. you come? Yesterday. Yesterday, see? Yeah. And this morning she's ready to come. Yeah. Yeah. Okay, welcome. Thank you, Didi. Didi, when we were He there, also has come because there is a, they wanted me to mention big project going on in Pandavavan. yes, And they creating a big kitchen. They, on Zoom, they send me the map. that's right. You were there. And they showed me exactly almost like Shantivan. And because government, they got some extra land, very big, beautiful kitchen will be there. And the best equipment, we said make as good as. So Gopi Ben is in that team helping to coordinate, and we, most of us from foreign countries, like we did hygiene water project, hygiene and water, same now we're taking on to Pandavan kitchen. Mm, So you Yeah, are okay. also came for that. yes. Yes, I have. Thank you, Didi, for that reminder. It's like touching the heart of the yagya. Pandav Bhavan is anyway the heart, but the heart of the heart is that kitchen. So many souls have been sustained by it. Didi, when I was in China, usually Tulsi Bai sends us these Bapdada clips. And there was one clip that he sent. And in that clip, Baba was saying, when you get tired, the method to re-energize yourself is to remember your attainments and relationships. And just straight after Murli, we just all sat together and we did this exercise. Sit down, make a list of your attainments, remember the relationships. And I saw the transformation in the room, the souls, as their attention shifted you away. did this in China? In China, yes, with some of the Brahmins. And their attention shifted away from the feeling that we're alone. Yes, Baba's somewhere, but, to a real personal connection. But as I was listening to people share about attainments, there were various levels of attainments. There's the physical level, what I've received from Baba, practically a roof over my head, something to eat, fortune of service. Then somebody was talking about attainments in terms of qualities and virtues. So I just want you to describe, are our unlimited attainments our transformation? Is it the relationship with Baba? Is it the qualities? What is it that we have to remain merged in? But also there is good news for China. No? Yes, they can now come. they could get the visa for India. Yeah. And for 6 years they couldn't come. That's right. But now this year they will be able to come. So they were very happy that now we could come, because I talked to the family when she was here on Zoom. And one day before this news had come, so everyone was very, very happy. So we will see China family in Madhuban now. What Gopi Ben is describing is worth experimenting. And she said what they tried to do is make everyone write down the attainments of the confluence age. And exercise was that to sit in that, merge in that, and then the transformation and the experiences which people have were physical, mental, like feeling overall, because they sometimes feel lonely because China government really no way allow all this. So everything is in, I can't talk here too because you don't know. But it's very, I also went there and I saw how it was. So I know, I'm sure Vyakti Parivar, they always listen and they are always connected. So what kind of list what was in the Well, list? there were many, because Like- Baba today spoke about unlimited attainments. So some people were talking about the physical things they've got from Baba. No, but Others were talking about different transformation. attainments. Yes. What is the difference between limited attainment and unlimited attainment?
See, a lot of people, majority in path of bhakti, will go to God to fulfill their desires. Right? I want this. This is the sorrow. This is trouble. Either he has to remove sorrows, or he has to give. No, that's why we went. Oh, I want wealth. I want my mother to be like this. I want this. People went. They always go for limited. And that is why when, sometimes some children will go to Brahma Baba and say, Baba, I'm starting this business, and what is Baba Shrimat about it? Those who were very obedient and surrender, Baba will advise, no, oh, I haven't come for this. I have come to make souls pure from impurity. That used to be the reply of Brahma Baba. But of course, because he was a businessman, he had a lot of experience, but Baba didn't use that even to advise people. So it's like Baba made it sure that what I have come to give you is about the soul consciousness, making you Satopradhan, making you pure, so it's like what Baba has come to give us. Now, when we begin with attainment, the first attainment really is our purity. Because if you look at in the world, there is so much body consciousness. Body consciousness in a very, very negative way. Not in I'm not talking of now violence and war, but the vices of lust and anger. And when you look at the leaders with their mouth full out in anger, wow, that's the leadership. How can, our Brahma Baba as a leader, Baba never got upset. Baba never got angry, So we're living in the world of contrast where our attainment is completely viceless, up to extent that we have maryadas, we have disciplines, we follow principles, and so our attainment is purity. And when you are pure, then you have love, you have peace, you have happiness. All that is from purity. So these are our real attainments from God. So actually, either morning hours or while doing karma, yoga, when there is a situation, of any kind, we use our virtue, we use our, calmness and cool, and in that situation, with this kind of attainment, that we are able to, our response is completely in contrast with what is happening in Kali Yuga. And we're going to Satyug, but at confluence age, our own nature and behavior is of Satyug almost, because people can't imagine. Many people, many situations will come to me longing. You stay so quiet, you stay so peaceful. So I said, what is other? Is there any other solution? Once there was a luggage. I'm coming from somewhere in Delhi, and luggage was not coming. So people were getting angry on airlines. What's happening? Why? And I went and sat on the bench. I said, okay, when it comes, I was alone, I will pick up luggage. So Indian Airline, they came to me and said, ma'am, how are you sitting so quietly? Say, what should I do? So one came, other came, they all start sitting. And I was still quiet, but they say, tell us something. So I said, okay. So these are our attainments, comparative to what it is. So we remain merged in, let me be in peace, let me be in love. This is called remaining merged. Even the situation is of upheaval. Even the situation would be very scary or whatever. It's a beautiful description, a dharana of purity as an attainment. Because it seems to me when you said in bhakti, of course, people asked because there was desire. And this is where love is not present anymore. When there's desire, you want, you ask,
So I'd like you to go into this subject of what does it mean to have love, be loving, and remain merged in love. You have love, be loving, and some people say, I have love for Baba. So that, No, so when you have love, if you have true love, you will be loving. And that's what we hear, no, about Brahma Baba or Dadi Prakashmani, or when I have love, then I am loving, no? When I don't have love, then I am not loving. And when I am loving, then what is the last one? being merged in love. Yeah, then merged in love. Yeah. So it goes by the way you are saying it. First one has love, then you are loving, and that means you are merged in God's love, you know. These days, what is important? Just be loving, you know. I really not only feel merciful, but you know, so many souls come. It's only 2 days, but because of Rakhi. So one soul kept standing in front and keep taking, you know, my attention was then I suddenly looked at it. It's just the vibration of Baba's love. If Baba, I have love for Baba, so I have to have love for everyone naturally, you know? And that definitely helps me to be merged in God's love. But that the expression of being spiritually loving is so different to being logically loving. No, our love is spiritual love, no? Yes. In logic love has attachment. And spiritual love is and not also interference. sorrow. Sorrow, that's true. No love is without sorrow. Insecurity, jealousy, so many things in logic love. Spiritual love, no. Let everyone progress, let everyone grow. And it's very, very subtle. One thing, a beautiful topic had been coming in my mind to how help every soul to spiritually grow. You know, it's like that's real seva actually at this time. And it only comes when there is true love of Baba, then true love for the souls also. Didi, I remember when I was interviewing Dadi Kumarka many years ago, one of the questions I asked her is, why does Baba love you so much? And she replied to say, because Dadi's eyes have never become trapped in any person or anything. It's only one Baba and none other. And I thought, that's such a high stage where the love is so pure, there's no attraction. And then when we were listening, I was listening to the videos, I was coming, her story, and I was just struck. She said, I never went anywhere without telling my mummy and my dad, you know, and it was so sweet, mummy, papa, you know, that the respect, I felt as if this soul in eternity has never broken any connection. She's maintained respect of relationships, respect of the elders, respect of the young ones, till the very end, which allowed people to feel Baba's love through her. So could you explore this relationship of love and respect, please? You know, that quality of obedience means, of course, there are certain family values, and this whole thing also remains when you are older, you know, when you grow. When you leave home, at least you tell that I am leaving. You know, okay, I don't, one is permission, other is, so when I am there, you know, at center, we are many. And everyone, when you come in, no, when you have to go, you say, I am going. When you come in, you say, I am here now. People just go, come, you know, it's like they don't even inform your immediate family.
When I say immediate family, those who are together. So that quality remains in my culture too. We also in New York, like everyone, because they know that if we are out and haven't come, Sister Mohini won't sleep, like I will say, where is she? What happened? The wasteful thoughts are there. That is one thing. And is it because people don't realize when there is this song which our sisters sing that if I have attained everything, then what's that song? That means your mind cannot go anywhere. See, that's where she is number one, because there was nowhere that her intellect, even she was very close, There whereby I came to, he was 19 in Bombay. So he started going where Dadiji was there. And one time he's sharing his experience that there was, this song, and Dadi was in very super sensitive joy, and she was dancing, and she held his hand and started dancing, and he was kind of, that. But like Mama's purity, like a mother, even she was young, same as Prakashmani Dadi. Because purity, then the love from that purity for everyone, One time somebody did something was not right. And so Didi keeps saying, but like he should get some kind of, not punishment, but he shouldn't repeat it. And Dadiji said, let go, let him be free. Take out from the mind, let him fly. Wow. And I was saying, look at her. So then love and mercy, love and compassion. And also, one time there was a big program that they wanted all Mahatmas to come. One reason was God's home, another was to eat from Baba's Bandara. So the food had to be cooked in ghee. So only myself and Jayanti, when we told them, please no, can we get oil because we don't eat ghee. And Dadi said, for everyone, Nivasis will get ghee food. Because she didn't want to differentiate that Mahatmas get ghee and my sister. Yeah. So she had a big heart, generosity. And when I raised the hand, asked people to raise hands in Shantivan, 80% surrendered during Dadi Prakash Pandit's time. They came as young boys, stay. More than 80%, those who are cooking for 30 years, 40 years. It's only Dadi Prakash Pandit, So that means her love, not only purity in expression of love, helps souls to trust and to surrender. And it brought out so much potential, and it brought out so much respect from people. Sometimes I feel like when somebody lacks self-respect, they don't think they're valuable. So they don't think that somebody's thinking about them, that somebody wants to know where they are and what they're doing. And I was just feeling this aspect, just the last question, the subject of weakness that Baba spoke about. Baba, in one of the Avyak Murlis, quite a while back actually, had said, the final form is that of being a Shakti. The form of a Shakti is not merciful. It is a destroyer of evil sanskars for the self and for others. And so there's this contrast between Shakti, power, and love. So can you speak a little bit to this balance of love and power? Power of love is there. See, it's power and it's love. If we realize that the power is of love, right? So Shakti's real form is to destroy the devil for the love, for good, no? Nice. So power is there, and then love is there. Nice. So I think that each one of us
should really feel very fortunate that we receive knowledge from Baba. It's not, they say that when you do a lot of bhakti, you meet God, but nobody tells you when you meet God, then what happens, right? Our story begins from there, that we met God. They say, oh, you met God, right? But what we receive from God is knowledge, purity, love. And that should be in our life, so people know they must have met God or they are meeting God. And every Baba's child feel to reveal Baba that's the responsibility is through your life. No? And this is really the time to fly in attainments. Really it is. Sure. Thank you, Didi. Okay, Shanti. thank you. Om Shanti, thank you. And tomorrow is Tuesday, and our schedule from Amritula 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening, 5 to 6 p.m. English Avec Mule revision. Together with that, in breakout room Avec the Children Mule class, 6 o'clock. But we will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. So now let's remember Baba and take drishti from Didi. पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने। करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला नाम को शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा।
चमकाया तकदीर का बाबा तूने हर एक सितारा जन्नत का हमको दिया अनमोल ये खजाना बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना पाना था जो पा लिया कुछ भी रहा ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति मोहिनी दीदी। Thank you, Baba. Thank you, everyone. Shanti Thank Mohini you, Didi. Baba. Thank you very Shanti. much. Have a nice Shanti, day. Sister Thank you, Gopi. Devi. Om Shanti, Shanti Baba. Shanti Sister Didi, Gopi thank you Ben. Baba. Om Thank you. Shanti. In order to be an easy yogi, become experienced in God's love. Remain constantly lost in unlimited attainments. The Father has so much love for you children that in order to give you a response every day, He writes such a long letter. He gives love and remembrance and becomes your companion and fulfills the responsibility of companionship. For this love, surrender all your weaknesses to Him. Remain merged in God's love in such a way that no limited influence can attract you. Remain constantly lost in unlimited attainments through which the fragrance of spirituality spreads into the atmosphere. सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं।
तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए।